अच्छा है, पढ़ाई के दिन शुरू हो गए, तुम लोग भी फुल मोटिवेटेड एंड पम्प्ड अप लग रहे हो मुझे, फुल राइट। आई सी द एनर्जी हेयर। मोटिवेशन ही मोटिवेशन है, ठीक है जी। क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया था पेपर 2, बेयर बियर्स। दिस वाज द क्वेश्चन दैट वी स्टार्टेड। नो टेंशन, डोंट टेक टेंशन, there is no faida of taking tension. It is good to prepare well. It is good to uh, give your best shot. It is good to just organize yourself, रूटीन में आओ, खाओ पियो, अच्छी मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, प्लानिंग करो, पास्ट पेपर्स अटेम्प्ट करो, मतलब जस्ट गिव योर बेस्ट शॉट ना, दैट्स व्हाट यू कैन डू राइट। सो जस्ट गिव योर बेस्ट शॉट। और टेंशन से नहीं होता है, सही है, टेंशन से एग्ज़ाम अच्छा नहीं होता है, टेंशन से इनफैक्ट ख़राब हो जाता है। टेंशन लेने से अगर कोई एग्जामिनर कह रहा है कि कोई फ्री मार्क्स दे रहा हूँ भाई, टेंशन लो तो 2 मार्क्स एक्स्ट्रा है, तो कोई फ़ायदा भी है ना यार, मतलब कोई टेंशन का फ़ायदा तो है नहीं। तो फिर फ़ायदा क्या होगा टेंशन लेने से? इट्स गुड टू जस्ट वर्क हार्ड एंड फोकस ऑन योर एफर्ट, फोकस ऑन हाउ यू प्रिपेयर, जस्ट देन गिव योर बेस्ट शॉट, दैट्स इट। रिजल्ट फिर बुरा आना हो तो आ जाए यार, कोशिश तो की होगी ना तूने यार। अल्लाह करे सबका अच्छा रिजल्ट आए, दैट्स नॉट व्हाट आई मीन, बट राइट। अगर मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे टेंशन के तो मैं बाल सफ़ेद कर लूंगा। बाल सफ़ेद हो जाएंगे अगर। चलो खैर, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, कम ऑन। सो पार्ट डी जो है ना, वो हम आज अटेम्प्ट कर रहे हैं, 12 मार्केट दिस वन। अच्छा बड़ा क्वेश्चन है, ज़रा हम ये केस रीड कर चुके हैं, एक दफ़ा हम वापस देख लेते हैं अगर केस याद है तो। सो थोड़ा सा मेरी फास्ट जाऊंगा, ठीक है, अगर फॉलो थ्रू करो, कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क ऑन द चैट स्क्रीन। BB is a business partnership owned by Sair and Chica. BB produces personalized teddy bears for children. The toys are made using mass customization targeted at specific market segments. Each toy has the same shape and size, but it is customized with names and words provided by the customer. ठीक है जी, हम customized teddy bears बना रहे हैं. These are hand stitched onto the toy and the employees are paid using piece rate. Customers receive their products within a week of ordering. Okay, so when the customers order, they'll just get their orders within a week. Quite a good delivery time. And each toy is sold for $50 and has a unit contribution of $6. Last month, BB sold 4,000 units with a margin of safety of 120 units. And BB currently holds a large amount of inventory in a temperature controlled warehouse. And then they have like three different types of inventories. They have no finished products, but they do hold raw material and work in progress. Said thinks that BB should adopt a just in time approach to inventory management. However, Chica is concerned about the possible impact on BB, so they are planning to introduce JIT. जिसके ऊपर हमने last question किया था. The stitching department is managed by Chica. She has recently received a complaint from David, who is the only male employee in the stitching department. ओके, सो डेविड की तरफ से हमारी कोई कंप्लेंट आई है, क्या कंप्लेंट याद है ना, कंप्लेंट इसने बॉय ने की थी। आई फील दैट आई एम बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट because I am a man. Oh my God. Oh, he is being discriminated because he's a man. There are no washroom facilities for me on the ground floor, but there are for the woman. Okay, ये कह रहा है वॉशरूम नहीं मिलता ग्राउंड फ्लोर पे. I have to go up 2 floors for a washroom, which takes me a lot of time. ऊपर जाना पड़ता है बाथरूम करने के लिए भी, ठीक है. I am given all the tasks which require heavy lifting. I am often asked to fix problems with other people's stitching machines, and this slows my production. जो मशीन मेंटेनेंस करवाते रहते इससे. I earn less money than anyone else in the stitching department. So he's not earning enough. He's not being given the proper toilet facilities, and he is often asked to fix problems with someone else's machines. So boy is feeling that he is being discriminated at work. And what this part D says now, today we have to attend this part D, 12 marker. So evaluate the most likely impact on BB. Evaluate the most likely impact on BB of increased equality in its stitching department. If they increase the equality in the stitching department, like मतलब इक्वालिटी पे ज़्यादा अगर फोकस हो जाए हमारा, जब हम अपने एम्प्लॉयज़ के इन कंसर्न्स को देखें, दैट दे आर फेयरली ट्रीटेड, एंड एवरी एम्प्लॉय दैट वर्क्स इन आवर ऑर्गेनाइजेशन शुड बी like treated on the basis of merit, not on the basis of their caste or color or religion or gender. Like I should not treat my or discriminate my employees
on any unfair grounds, and I should be creating an inclusive environment for my employees where everyone feels being treated equally. That's a very important feeling that you need to give to your employees, because right, that's important. So evaluate the most likely impact on BB of increased equality in its stitching department. इंट्रोडक्शन आएगा इसमें, इंट्रोडक्शन, टू मेन पैराग्राफ्स एंड अ कंक्लूजन पैराग्राफ ना. स्ट्रक्चर तो हमें पता है, पार्ट डी, इंट्रोडक्शन, पैराग्राफ वन, पैराग्राफ टू, एंड देन अ कंक्लूजन. इंट्रोडक्शन में हमें डिफाइन करना होगा डेफिनेटली इक्वालिटी को, कि इक्वालिटी क्या होता है, इक्वालिटी पॉलिसी हम डिफाइन कर सकते हैं. एंड देन आई हैव टू राइट लाइक द इम्पैक्ट ऑन बीबी. लाइक इफ दे फोकस मोर ऑन इक्वालिटी, देन व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन, जा रहा है सही है, ठीक है, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन बीबी नाउ. सो व्हाट्स द इम्पैक्ट ऑन बीबी, क्या इम्पैक्ट होंगे अगर हम वो ज़्यादा इक्वालिटी पे फोकस करते हैं तो. High employee morale and motivation. Yes, that's one of the positive impacts that will be on BB, because if we treat them equally, then the employees will feel more trusted, more respected, and their morale and the motivation would definitely improve, because उनको लगेगा कि यार उनकी complaints को सुना जाता है, उनको हम इक्वल ट्रीट करना चाहते हैं. अच्छा, ज़ाहिर है ऑर्गेनाइजेशन जब ऐसी पॉलिसीज़ बनाएंगी और जब इस तरह की बातों को सीरियस लेंगी कि हमारे एम्प्लॉयज़ इस तरह की बात ना एक्सपीरियंस करें, तो अल्टीमेटली एम्प्लॉय भी अच्छा फील करेगा ना. मैं भी अगर कहीं पे जॉब करूंगा, इफ़ आई वर्क इन अ कॉलेज लेट्स से, एंड इफ वी आर बीइंग ट्रीटेड इक्वली एवरीवन, then as an employee you feel right, as an employee you feel important, right? So एक तो ये कि मोटिवेशन का हम पॉइंट लिख सकते हैं कि मोटिवेशन के ऊपर बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, ठीक है, जिससे फिर वो प्रॉब्ली प्रोडक्टिव ज़्यादा होगा, ज़्यादा टॉयज वो काम कर सकेगा प्रॉब्ली, क्वालिटी वो बेहतर देगा, बिल्कुल, ठीक है, टर्नओवर भी कम होगा, ठीक है. और सेकंड इम्पैक्ट क्या एम्प्लॉय के अलावा, मतलब मोटिवेशन के ऊपर, और बिजनेस रेपुटेशन इज ऑल्सो अ वेरी गुड पॉइंट. कॉस्ट भी बड़ा अच्छा पॉइंट है वैसे, कि कॉस्ट भी बढ़ जाती है, हाँ. क्योंकि जब आप इक्वालिटी पे फोकस करते हो तो जाहिर सी बात है, फिर आप, जैसे अगर डेविड की कंप्लेन हम सुनते हैं तो हम शायद वॉशरूम जो है वो कंस्ट्रक्ट करवा रहे होंगे ग्राउंड फ्लोर पे, हम जो है प्रॉबली फिर मेल एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करने का सोचेंगे, तो उसकी कुछ कॉस्ट्स भी होती हैं. जाहिर है, इफ़ यू आर ट्राइंग टू बी वेरी नाइस टू पीपल, इफ़ यू वांट टू ट्रीट देम सो इक्वली, देन इट ऑल्सो कम्स अप विद द कॉस्ट्स. इट्स नॉट लाइक, ऐसे ही नहीं होता ना. आप फिर मेल एम्प्लॉयज़ को रखोगे, आप वॉशरूम्स कंस्ट्रक्ट कराओगे, मे भी इस तरह की चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, तो फिर और कल को कोई और नया एम्प्लॉय बोलेगा, दूसरे डिपार्टमेंट से बोलना शुरू करेंगे कि सर हमारी ये कंप्लेन है, हमें भी ये फील होता है. तो जितना आप अपने एम्प्लॉयज़ को इक्वली ट्रीट करना शुरू करते हैं, उन चीज़ों की कॉस्ट्स भी होती हैं, बिकॉज हमने आज डेविड की कंप्लेन सुनी और हमने इस पर एक्शन लिया, फिर कल को कोई और एम्प्लॉय आके आपको कंप्लेन करेगा, फिर हम उस पर एक्शन लेने लगेंगे. तो मतलब इट्स अ थिंग, इट्स ऑल्सो कॉस्टली इन द शॉर्ट रन एटलीस्ट, राइट. कॉस्ट भी बड़ा अच्छा पॉइंट है. और रेपुटेशन का भी एक पॉइंट लिख सकते हैं, बहुत अच्छा है, कि रेपुटेशन जो है वो हमारी एज एन एम्प्लॉयर जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है. जिससे कल को हम जब रिक्रूटमेंट करते हैं, कल को कोई नई वैकेंसीज आती हैं, तो वो उससे बेहतर हमारे पास वैकेंसीज के लिए कैंडिडेट्स आते हैं. हम वैसे ही बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय पे भी रिलाई करते हैं ना, क्योंकि वो हैंड स्टिच्ड है चीज़. और हमें अपने केस की बात करनी है, जितनी ज़्यादा हम केस की बात करें उतना बेहतर है, ठीक है. एंड ओपिनियन में आई थिंक हमें देना होगा कि व्हाट डू यू थिंक विल बी द बिगर इम्पैक्ट ऑन on BB. Recruitment is like finding the new person. If we have a vacancy, if we have an available position in a company, we find the person. That process of finding the person is known as recruitment. Okay, I think हम फिर ओपिनियन देंगे कि डेफिनेटली इक्वालिटी का बड़ा इम्पैक्ट होता है, और इन द शॉर्ट रन आई थिंक
if I would be writing a conclusion, then this short run, long run technique also is really helpful. I can write that in the short run, it will definitely add to the costs also, and it will also add to the financial burdens. But in the longer run, it will have a very positive impact. And it obviously also depends on uh, that legalities क्या है, क्योंकि इसमें बड़े लीगल कॉन्सिक्वेंसेज है ना। क्योंकि ज़ाहिर है आप इस तरह से जब एम्प्लॉयज़ को इक्वली ट्रीट नहीं करते अगर, और डेविड कंप्लेन करता है और अगर इस तरह के इश्यूज आते हैं तो इसमें लीगल इश्यूज भी आते हैं। बिकॉज इफ एन एम्प्लॉय फील्स लाइक दैट दे आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड, दे कैन एक्चुअली sue you एज एन एम्प्लॉयर। दे कैन फाइल अ केस अगेंस्ट यू एंड दे कैन क्लेम दैट ओके आई एम नॉट बीइंग ट्रीटेड फेयरली। एंड जो लॉज कोर्ट होता है वो इन इश्यूज को देख रहा होता है, इस तरह के केसेस होते हैं कोर्ट में। समझ आई, यानी कि इट्स अ लीगल प्रॉब्लम ऑल्सो। देर आर एम्प्लॉयमेंट लॉज इन एवरी कंट्री, and there might be a lot to in every country, in Germany, in the European states, in US, there are a lot of strict employment laws, and you have to follow them, right, as a business. So if you are being treating not treating the people equally, they might just claim against you, and हो सकता है कि आपको legal fines भी पे करना पड़ सकते हैं। But it depends on how serious the laws are, because हर market के laws किसी के ज़्यादा strict होते हैं, किसी के नहीं होते हैं। ये बात तो पता है तुम लोगों को शायद, कि किसी मार्केट के अंदर शायद लॉज होते हैं लेकिन लोग फॉलो नहीं करते, और कहीं कहीं होते हैं और फिर उनको फॉलो भी करना पड़ता है, स्ट्रिक्ट भी होते हैं। ठीक है। फुल मैंने जो है वो तुम्हें इक्वालिटी आई थिंक पढ़ाया है, तुम्हें समझ में आ गया इक्वालिटी, अब भूलते नहीं है कभी हम, हाँ। देखा, क्लास का ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि हम लिखें भी आंसर, लेकिन साथ साथ हमारा टॉपिक भी रिवाइज हो जाता है इससे। एंड इट गिव्स यू ऑल्सो अ बेटर प्रैक्टिस, आई बिलीव। राइट, इज इट क्लियर अप टिल नाउ? थोड़ा सा फास्ट लिखेंगे, ठीक है, अपने पास भी नोटबुक्स में लिखना है ये आंसर। एंड ट्राई टू राइट अ बिट फास्ट, ओके। एंड फोकस के साथ लिखो, सोच सोच के लिखो कैसे हम लिख रहे हैं। एग्जाम में कल को तुम जब आंसर लिखोगे तो कैसे लिखोगे, हाउ डू यू गो अबाउट इट। एंड एवरी वन कैन हैव अ वेरी डिफरेंट आंसर। इट्स अबाउट द टेक्निक, इट्स अबाउट द वे वी थिंक वाइल राइटिंग, इट्स नॉट अबाउट द एग्जैक्ट वर्ड्स। It's always about how we are thinking when we're writing, the approach, because when you will be in your exam, you will be writing your answers. So you don't just focus on what are we writing, you also need to focus on how we are writing, how we are thinking while writing, right? So that's an important part. And equality policies are designed equality policies are designed by organizations to ensure that an inclusive workplace environment can be developed. Inclusive workplace environment can be developed where the employees are treated where the employees are treated on the basis of merit rather than on the basis of on the basis of an unfair reason, such as on gender, religion, caste, or color. Like, you have to treat the people equally, no?
That's the game. And every organization these days want to make sure that their employees are being treated equally. That's and एक दफ़ा रेपुटेशन ख़राब हो जाती है ना, तो कंपनी के बहुत ऑफ सीन्स हो जाते हैं, पता है। एक आपने अगर कोई ऐसा स्कैंडल हो जाए, कोई इस तरह की बात अब आ जाती है ना मार्केट में, लाइक दीज आर नॉट ट्रीटिंग इक्वली, एंड द कम्युनिटीज आर गेटिंग रियली पावरफुल दीज डेज। दे जस्ट गो फॉर स्ट्राइक्स एंड दे वुड जस्ट कॉल इन एक्शंस। तो सोसाइटीज़, बड़ी डेवलप्ड सोसाइटीज़ जो हैं, स्पेशली जो लिटरेसी रेट जब जहाँ पे ज़्यादा है, वहाँ पे तो बिजनेसेस बड़ा सीधा चलते हैं भाई, उनको पता है। एंड वन ऑफ द इम्पैक्ट्स of increased focus on equality will be will be an increase will be an increase in the motivation level of staff. One of the impacts of increased focus on equality will be an increase in the motivation level of staff. This is because if the complaint of David is properly addressed, if the complaint of David is properly addressed, then the employees will feel that they are significant and important to the business. Therefore, this is because if the complaint of David is properly addressed, then the employee will feel that they are significant and important to the business. Therefore, इससे क्या होगा? Therefore, the level of work from them might improve. Level of work from them might improve, helping BB to to helping BB to increase the quality of toys being produced, leading to leading to an improvement leading to an improvement leading to an improvement of customer service and the sales for the business. All right, full stop के बाद next paragraph. Another impact on BB due to an increase in focus on equality will be the improved
will be the improved reputation of the business as an employer. This is because ऐसा क्यों होगा ऐसा कि रेपुटेशन बढ़ जाएगी। क्योंकि हम किसी भी तरह की लीगल प्रॉब्लम से बचे रहेंगे, हमारी मार्केट में रेपुटेशन ऐसी होगी, शायद हमारा लेबर टर्नओवर इतना कम होगा कि मार्केट में बात फैलेगी कि यार यहाँ पे तो लोग नौकरी नहीं छोड़ते भाई। दिस इज बिकॉज बीबी will be able to avoid any form of legal issues. BB will be able to avoid any form of legal issues related to employment employment legislations, employment laws को employment legislations भी कहते हैं। Any form of legal issues related to employment legislations, and would be able to maintain would be able to maintain low labor turnover. This will therefore Another impact on BB due to an increase in focus on equality will be the improved reputation of the business as an employer, because their reputation will improve. Okay, यार ये employer अच्छा है. This is because BB will be able to avoid any form of legal issues related to employment legislations and would be able to maintain low labor turnover. This will therefore this will therefore allow the business to have better and more effective recruitment process, as BB is very reliant on employees, as the names are hand stitched. So better reputation will lead to much better personnel, as the people would be willing to work for BB.
पहले हम कंक्लूजन लिख लेते हैं, उसके बाद मैं कंसर्न्स के पॉइंट्स जवाब देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया, पहले बता दो यहाँ तक हो गया। ओवरऑल, in my opinion, that due to an increase in the focus on equality, due to an increase in the focus on equality, BB will have to face an increase in costs. सही है। Overall, in my opinion, that due to an increase in the focus on equality, BB will have to face an increase in costs in the short run, but in the longer run, but in the longer run, improvement in reputation will yield significant returns. This is because if BB addresses David's complaint, they may they may recruit some additional male employees, or they may construct male washroom on the ground floor. This is because if BB addresses David's complaint, they may recruit some additional male employees, or they may construct male washroom on the ground floor. This will need this will need the financial resource for BB. When increasing the focus, BB must ensure that sufficient when increasing the focus, BB must ensure that sufficient budget is allocated for this purpose, and they should have, or they should have some controls, or else every employee in other departments may also start to complain. वरना बाकी के डिपार्टमेंट में लोग रोना शुरू हो जाएंगे, यार हमारी भी फिर कंप्लेन हैं, हमें भी इस तरह की चीजें दो।
In the no, in the conclusion part, should not use BTL. We could only use BTL in the para 1 and para 2. Copy this down. और 12 मार्कर लिखवाया है मेरे ख्याल से काफ़ी एक्सटेंसिव तरीके से, डिटेलिंग में जाके. Definitely, when you write this answer, it should be a very, very different answer. And ऐसा ज़रूरी नहीं कि सेम टू सेम तुम लोग लिख लो यार, जो बात है ज़रूरी नहीं कि यही एज इट इज़ तुम लिख रहे हो. ये तो सिर्फ एक सैम्पल आंसर है. इसको इसलिए लिखवाया है ताकि कल को तुम अगर अपना आंसर लिखो तो तुम्हें एक आइडिया हो कि कैसे आंसर्स कंस्ट्रक्ट होते हैं, है ना. सो दैट्स हाउ इट इज़. आई गेस यू अंडरस्टैंड दिस 12 मार्कर नाउ. ओके.